Let us start. I am discussing about the topic of the graph theory, that is the isomorphism. Isomorphism means the ऐसे टू ग्राफ जो अलग अलग तो दिख रहे हैं लेकिन वो उनके स्ट्रक्चर लास्ट एंडिंग में कोई प्रोसीजर के द्वारा वो सेम हो जाए। मतलब कि कोई भी दो ग्राफ अलग अलग तो दिख रहे हैं लेकिन उनके जो एजेस और वर्टिसेस हैं उनके करेक्टर उनके सेम है। दैट इज़ द आइसोमॉर्फिज्म मीन्स द सेम ग्राफ, एक जैसे लगना। लेट अस सी द definition of isomorphism. If two graphs G1 and G2 are said to be isomorphism if there exists a function f such that vertex of G1 related to the vertex of G2 such that, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फंक्शन होता है किसी एक सेट पे ऑपरेट होकर दूसरा सेट पे वो ऑपरेट होता है, किसी एक सेट पर ऑपरेट होता है। जैसे यहाँ पे ग्राफ कोई है हमारा, कोई एनी ग्राफ G1 है, उसके एक वर्टेक्स सेट पे हमारा फंक्शन ऑपरेट होता है और कहाँ पे रिलेट होता है, वर्टेक्स ऑफ द G2 पे। सच दैट यदि हमारा फंक्शन दो प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है या दो प्रॉपर्टी को कंसिस्ट करता है तो वो हमारा फंक्शन, हमारा जो दोनों ग्राफ होगा, जो हमारा ग्राफ होगा वो कहलाएगा आइसोमॉर्फिज्म। let us see first property, f is a bijection. That means f is a bijection means मतलब कि हमारा जो फंक्शन होना चाहिए वो 1 on 2 होना चाहिए। That means vertex of G1, one vertex of G1 related to the one vertex of G2. Similarly, f second condition, f preserve agency. That means any vertex of G1 consists of same agency vertex of G2 consists of the same agency. That means let us see the example of the isomorphism. Let us consider the two graph G1 and G2 such that 1 and 4 are pendant vertex because the number of incident is on A1 and number of incident is on 4 should be equal to 1. We know that the pendant verse, the degree of any vertex should be equal to 1. Therefore, these are called as the pendant vertex. Therefore, 1 and 4 are pendant vertex in G1. Similarly, there are 1 and 4 are two pendant vertex in G2. Therefore, one of G1 related to the one of G2. Similarly, one vertex is related to the 3 in graph G1. Similarly, the one vertex of graph G2 is related to the 2. Therefore, we can say that the vertex 2 of G1 is related to the vertex of 3. That means vertex 2 of G1 is same work as the vertex of 3 of graph G2. Therefore, we can say that vertex 2 of G1 is related to the vertex of 3 of G2. Similarly, 4 vertex as a pendant vertex related to the pendant vertex 4 of G2. Therefore, we say that 3 conditions satisfy for the isomorphism. Therefore, we can say that graph G1 is equivalent to the graph of G2. We know that if any two triangle del 1 and del 2 are equivalent, therefore this symbol is indicated that the two triangle is equivalent. Similarly, we can say therefore 3 property satisfy of the two graph. We can say that G1 and G2 are isomorphism.